सो इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज द सिग्नल, मुझे कंट्रोल सी यूज़ नहीं करना क्योंकि मेरी हैबिट है, कंट्रोल सी का मतलब है जनरली copy. So I can change it. STTY. Signal for interrupt is INTR. Interrupt signal. Let's say from today onwards I want to make it to A. मैंने A कर दिया. Now see, if I'm pinging to google.com, now try to press Control C. देखो Control C press कर रहा हूँ, but it is not getting interrupted. But if I press A, wow, closed. Fine. So INTR means interrupt and getting close, A button. Or similarly, if I want to change for exit or control the EOF, end of file, to let's say B, fine. So if I use let's say control D, ये काम नहीं करेगा, right? But if I use B button, terminal close. तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, शायद पता नहीं आशिफ ने शायद पूछा था, तो शॉर्टकट को यूज़ करने के लिए आप अपने टर्मिनल को इंटरप्ट सिग्नल समझा दो. नाउ इट्स वेरी मच अप टू यू. थोड़ी सी खुराफात की चीज़ें हैं, राइट. कभी मैं करता था तो STTY एंटर और मे बी -# help. Once you do that, you will get a list of all interrupt and XYZ signals. बहुत अच्छी कमांड है ये. फॉर एग्जांपल आप यहाँ जाओगे तो ये रहा, डिस्कार्ड, EOF, EOL, एंड ऑफलाइन, इरेज, इंटरप्ट, किल, क्विट, स्टार्ट, स्टॉप. You can set signal to your terminal by using STTY कमांड. ठीक है, ये मेरी तरफ से एक टिप है. वैसे तो मैं आपको पढ़ने के लिए देने वाला था, बट मैंने कहा थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ, राइट. Likewise, we have number of attributes and feature in shell. Fine. So if everything is all right till now, just let me know so that we can be on the same page. मतलब अभी आपको सब समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल एक यस मैसेज टाइप कर सकते हैं. राइट. प्रॉब्लम नंबर 3 and 6 देखना पड़ेगा क्या है प्रॉब्लम. आप क्रॉस चेक करके देख लो आशिफ, मतलब अभी प्रॉब्लम वापस देख. राइट, वंडरफुल. So now definitely if you want to make anything permanent in shell, just copy and paste in your shell. Anything you want to make it permanent, anything, either /root.bash rc or .bash_profile, anywhere. Fine. So same, just go there and paste it. Sorry, जो भी था यहाँ पे आप लिख सकते थे. Right. So any shell related data can be there. Yes, Kshitiz, you can edit, not a problem. Okay, you know what is the reality of that .bash rc or profile file? वैसे you know what the reality of, मतलब ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी है धीरे धीरे. reality of .bash rc and .bash_profile file is not just to make variables permanent. पता है सबसे सही चीज़ क्या है? इस फाइल या इस फाइल के अंदर आप जो भी लिखोगे
वो सबसे पहले चलेगा, एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जाम्पल, if I go in the very last, and what I'm doing is I'm writing here cal. ठीक है, मैंने cal लिख दिया, ऐसे नॉर्मल लिख दिया. Once I open a terminal, okay, terminal, क्या हुआ, cal कमांड चल गई. Permission denied है, that is different problem. So let me just make it executable. Okay, so मैंने एक और terminal खोला. See what happened. The reality of bash rc or bash profile file is to check anything that is written under that file and execute it first. After that आप कुछ भी कर सकते हैं, right? Alright, wonderful. तो ये मतलब ऐसे धीरे धीरे करके आप कुछ सोच सकते हैं. Okay, so बहुत सारी चीज़ें हैं. Now from today onwards I am going to start shell programming. आइडिया देना शुरू करता हूँ. शेल प्रोग्रामिंग, और काफ़ी लोग उसे शेल स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं. शेल स्क्रिप्टिंग, या काफ़ी लोग इसे यूनिक्स और लिनक्स शेल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं. Whatever you can call, it's very much up to you, right? So now we are going to take this from here. So first of all, if you have any prior programming language experience, it is going to be very much same, right? So simply कुछ question, let me check it. It will be showing permission denied, Kshitij, or maybe ask for that password if the user is configured in that context. Alright. Yes, Chinmay, you're right, at a login. Okay. Anyway, so to understand shell, we need to write or understand in a very similar pattern. So for example, how we write a shell programming. First of all, we need to create a file and start with the things. So let's say I'm going to create a folder here called July 3, 2020, and then I'm going to write my first code, let's say first.sh. So first of all, the very much standard practice is to give your file name as .sh. Okay, again, it's not a rule, it's just a best practice. मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप .sh ही देना पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्राम बुरा मान जाएगा like Java. Nothing like that. आप कुछ भी दो .txt दो तो भी चलेगा, but it's just a standard practice, right? So I'm going there. Again, you can start coding here, but again the best practice is hash exclamation and the name of shell you want to use to run this program. Again, ये फिर से बोल रहा हूँ कि this line is optional, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, but हमेशा लिखो. इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा. hash exclamation and the name of shell. Okay, where this sign
is called as shebang, या काफ़ी लोग इसे हैश बैंग भी बोलते हैं, राइट. सो स्पेसिफिकली इन मैक्सिमम लैंग्वेजेस जो एक इंटरप्रेटर है, राइट, जैसे कि आप अगर आप बैश को कंपेयर करो पाइथन से, पाइथन और मे बी पर्ल, लाइक दिस, जो भी लैंग्वेजेस हैं इनके स्टार्टिंग में ये लिखना चाहिए. जैसे पाइथन में इन जनरली वी कैन राइट यूएसआर बिन पाइथन 3 और पाइथन 2. ओके, सो द फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज shebang या hashbang. इसे क्यों लिखना चाहिए ये रिसर्च चाहे तो आप कर देना, अदरवाइज इन नेक्स्ट सेशन आई विल लेट यू नो. ठीक है, राइट दिस वन, सेव दिस फाइल एंड मेक, दैट्स इट. रन कैसे करना है, बैश एंड नेम ऑफ द फाइल, कोड लिखो, रन करो. ओके, सो फर्स्ट थिंग I'm going to write, let's say if I want to print some message, here is echo keyword and I'm going to write like hello world. Fine. Echo is very similar to printf, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ it's very similar to printf. That means जैसे आप C में print लिखते हो या printf लिखते हो, वैसे यहाँ पे hashtag means single line comment. So if I just save this right here, okay. Likewise, echo is very user friendly. Even you can write messages in single quotes, or if you don't want, you can write without any quotations, right? Save it and run it. Okay, so this is the way you should start. Okay, now sometimes you don't want to run your code like this, so what you can do, if you don't want to use bash specifically here, you can use chmod plus x and the name of file. इसको बोलते हैं executable बनाना. कैसे, right? It's very easy. See, so in Microsoft Windows in general you guys use right click to make file executable. तो मैं आपको एक रियलिटी दिखाता हूँ कि जैसे आपने ये खोला, इस फाइल की मैं परमिशन चेक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के अंदर परमिशन, यहाँ पे एग्जीक्यूशन में टैग लगा है. सो इफ़ यू वांट टू मेक इट एग्जीक्यूटेबल तो आप यहाँ पे टिक कर दो. टिक मतलब एग्जीक्यूटेबल, अनटिक मतलब ये. बट यू नो व्हाट, हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी आप ग्राफिकली करते हो वो कमांड लाइन से भी होता है, सेम एंड वॉइस वर्सा. तो मतलब आप ये टिक कर रहे हैं तो मतलब यू आर असाइनिंग एग्जीक्यूशन, अनटिक करते नहीं है. सी देखना, इफ़ आई एम डूइंग chmod प्लस x, राइट, इफ़ आई हिट एंटर, क्या हुआ यहाँ पे, टिक लग गया. इफ़ आई डू -x, हट गया, अगेन प्लस x लग गया. तो मतलब जो राइट क्लिक करके परमिशन देते हैं प्रॉपर्टी में जाके, उसका बैकएंड कोड chmod है, राइट. यस, वी हैव अ वेरी गुड, वेरी अमेजिंग सेशन ऑन chmod. बट अगर आपको कमांड लाइन नहीं पसंद आ रही तो आप ग्राफिकली जाके भी एग्जीक्यूशन दे सकते हैं. कैसे देना है, बहुत आसान है. राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं and permission tick, or the reality -x to remove plus x to assign. Okay, I hope it will be all okay for everyone. So once you've given execution permission, now you can run this code by using ./first.sh, जहाँ पे डॉट का मतलब होता है pwd. That means if you don't want to use dot, you can use the entire path July 3 first.sh. If you are already
sitting in this location, why to use this big path? So you can use dot means in the current location where my PWD is. Under this we have first purposes. तो मैंने आपको स्क्रिप्ट रन करने के 3 तरीके बताए. Number 1, you can use bash and file name. Number 2, after giving execution, this one. Or if you don't want to use dot, you can give entire thing like this. Okay, so it's very simple. लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका X परमिशन है, राइट. आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल ओके, ऑल फाइन. यदि सब सही है तो आप यस मैसेज बोल दें फटाफट. एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूँ शेल स्क्रिप्टिंग का, राइट. So give your response here. Okay, wonderful, wonderful, and wonderful. So first thing, all right. Moving on to the next concept in shell scripting is right here. Let's say if I want to define some variable in my shell scripting, so like other programming languages, there are no data types. Directly we can define variable like x, right, is equals to 100, or y is equals to hello, or z is equals to 2.4.5. It's pretty similar to Python, but if you want to print the echo, definitely we have discussed about the same already. So $x, right? If you want to call a variable, so let me just comment it down. Defining variables, right? Likewise, so I'm just taking this line and pasting over there, removing it from here. So x, y, z. Likewise, I can just copy both and y and z. Okay, so if I run them again, like dot slash this one, or I can use double exclamation to run the last command. ये shortcuts हैं जो आप use कर सकते हैं. Double exclamation means just repeat the last command. Alright, so this is something. Next thing in shell, how to take input from user. Okay, so for this, let me just create a new file, and I'm gonna call it user underscore input.sh. Again, cbang, and here let's say if I'm giving message, please enter something. Okay, so if I just use this code, it is going to give me the message. It is not waiting for. Okay, तो जैसे पाइथन में इनपुट या रॉ इनपुट होता है, सी में स्कैनएफ होता है, वैसे यहाँ पे होता है रीड. So and the variable is say called x. So the meaning of the read is to take input and store into x variable. So here read is similar to scanf in C or input in Python, right? It is going to take input. Definitely I want to print it back, so you have entered $x. ठीक है, तो I'm just running it, anything or anything.
simple. So taking input in scripting languages like bash or sh is all fine. There's another way also. If you want to take input by using read method, we can use another method. So let's say read hyphen p and enter a number, right? And then variable, let's say y, and then I'm printing $y. See, this is another method for taking input. So echo, we have given this, see, enter a number, something like this, and output. So either you can use echo method just to give some message, then use read, or read having an option like -p for paragraph, store the web input in y variable and print it back. If you want to give some time delay between message and input, always use sleep. Let's say 2 seconds, then sleep 3 seconds, and sleep 4 seconds. So it is going to wait to that time accordingly. I am hitting enter. See, waiting and waiting. Then I can type something likewise, right? Number, whatever it is. You can give delay in message. Okay, so this is something that I have given in user input. I hope it will be very much fine. तो हम next session में इसके आगे करेंगे. If you have any question, you can comment in the chat window, not in chat window, sorry, after completion of this video. आप comment section में comment कर सकते हैं. बाकी thank you so much guys.